Hello friends, in this video we are going to discuss duality in LPP. Now, what is meant by duality in LPP? With any LPP, there is another LPP associated with it. It's called the dual of the LPP of given LPP. Means with any LPP there is another LPP associated with it. It's called dual of LPP. The original problem is called primal and the other is called the dual. Okay. Now after that we see some steps to convert the LPP into dual. Okay. Now step number 1, if the primal contains n variables and m constants, the dual will contain m variables and n constant. Means primal means the given original problem. अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम में n वेरिएबल्स है एंड m कॉन्स्टेंट्स है तो डुअल में क्या हो जाएगा, m variables and n constant. Means it become interchange variables and constant. Okay. Then number second, the maximization problem in the primal becomes the minimization problem in the dual and vice versa. Means secondly, if the objective function is maximization in the given problem, then in dual the objective function become minimization. अगर minimize है तो maximize करना. Okay. Then number third, the maximization problem has less or equal to constant while the minimization problem has greater than equal to constant. मीन सपोज आपका फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप है तो आपके कंस्टेंट ऑब्वियस है लेस और इक्वल टू रहेंगे. अगर ये लेस और इक्वल टू है और आपको डुअल में कन्वर्ट करना है तो फंक्शन मैक्सिमम का मिनिमम हो जाएगा और कंस्टेंट बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप. ओके. देन नेक्स्ट इज नंबर 4, constants of less or equal to type in the primal become greater than equal to type in the dual and vice versa. Means again same here, constant, if the constants are less or equal to type in the original problem, then we have to convert greater than equal to type in its dual. Okay. And if greater than equal to type hai, then we have to convert less or equal to type. Okay. Then next number 5, the new set of variables appear in the dual. The next property is a new set of variables appears in the dual. Means here we have to consider the new variables in the dual problem. जैसे कि प्रॉब्लम में गिवन प्रॉब्लम में सपोज वेरिएबल है x1 x2 x3 x4 up to xn, then in the dual we just convert the new variable, that is suppose y1 y2 y3 up to yn. Okay. Then m, the constants c1 c2 cn in the objective function of the primal appear in the constant of the dual. The constant c1 c2 c3 up to cn मीन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो वेरिएबल के मल्टीपल दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट्स अपीयर इन द कंस्टेंट ऑफ द ड्यूअल. मीन्स जो आपके कांस्टेंट है ओरिजिनल प्रॉब्लम के दैट बिकम नाउ सॉल्यूशन वैल्यूज और कंस्टेंट में चले जाएंगे. कहाँ पे? ड्यूअल के. देन द कांस्टेंट b1 b2 bm in the constants of the primal appear in the objective function. मीन्स देखो नंबर 6 एंड नंबर 7 नंबर पॉइंट में ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कांस्टेंट्स डुअल
ड्यूल में कंस्टेंट में जाएंगे और जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज है मीन सॉल्यूशन वैल्यूज है इट बिकम ए वैल्यू कहाँ पे जाएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इट बिकम इंटरचेंज ओके दैट इज नंबर 7. Now we see one general example to convert the given problem to dual. Suppose we consider any example in general. Maximum of z is equal to suppose c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3. Suppose that is our maximum of z. Then subject to the constants that become a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 less or equal to b1. Then a21 x1 a22 x2 plus a23 x3 less or equal to b2. And third is suppose a31 x1 a32 x2 a33 x3 less or equal to b3. And non-negativity condition is x1 x2 x3 greater than equal to 0. Okay. Now suppose we have to obtain the dual of the example. Suppose we have to obtain the dual. Now before that original problem is called as primal. Means यहाँ पे आपको क्वेश्चन रहेगा convert the dual of the or write down the dual of the primal और obtain the dual of the following LPP. अब इस प्रॉब्लम को कहेंगे प्राइमल. Primal means original problem. Now we have to obtain the dual of the original problem. Means what we have to do? Now see that step by step. First step is write down the objective function. If objective function is maximization type, then we have to convert it into minimization type. अगर मिनिमाइजेशन है तो मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है, तो हम हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा मिनिमम ऑफ दैट इज द डुअल. यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं डुअल ऑफ द प्राइमल मैक्सिमम मिनिमम ऑफ z इक्वल टू. ओके देन अब देखो सॉल्यूशन यहाँ पे कांस्टेंट जो है c1 c2 c3 अप टू c1 c2 c3 these are the constant in the objective function and b1 b2 b3 are the solution values. Now this become interchange means solution value जाएगी अब objective function में और एक कांस्टेंट जाएगी अब solution value में. means we write here b1. again इसके पहले हमें क्या करना है we have to define the new set of variables. Means here variables are x1 x2 x3. now we define another set of variable that is suppose y1 y2 y3 and all are positive. that is the non-negativity condition. आपको यहाँ पे दूसरे टाइप की वेरिएबल डिफाइन करने हैं अदर देन x1 x2 x3. ये आपके प्राइमल की वेरिएबल है. हमें डुअल के लिए कुछ वेरिएबल चाहिए वो हमने डिफाइन किए दैट इज सपोज y1 y2 y3. देन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम से क्या हो जाएगा मिनिमम. अब सॉल्यूशन वैल्यू जाएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मीन्स इट बिकम b1 y1 प्लस b2 y2 प्लस b3 y3 एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन द डुअल. देखो ये कन्वर्ट हो गया लाइक दिस. देन सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स. अब कंस्टेंट्स में यहाँ पे m नंबर ऑफ वेरिएबल्स है और n नंबर ऑफ कंस्टेंट्स है. सो इन द डुअल इट बिकम n वेरिएबल्स एंड m कंस्टेंट. मीन्स आपको क्या करना है रो
become, or we have to take the transpose of the constants. मीन्स रो हो जाएंगे कॉलम और कॉलम हो जाएंगे रोज. मीन्स यहाँ पे आएगा आपका A11 Y1 प्लस A21. नाउ A11 21 31 21 Y2 प्लस A31 Y3. Okay. Then less or equal to become greater than equal to. Now B1 is replaced by C1. That is the first constant. Okay. Then second constant. Second constant is now A12 Y1, A22 Y2, A32 Y3 greater than equal to, it become here C2. And lastly A13 Y1, A23 Y2 plus A33 Y3 greater than equal to C3. Okay, these are the constants, or these are the dual of the constant, and the condition is Y1 Y2 Y3 greater than equal to 0. That is the non-negativity condition. देखो, that is the dual of the given LPP. Now एक बार फिर से देखो हमने क्या किया है. C1 x1 C2 x2 C3 x3 यहाँ पे वेरिएबल. Then we see the another example, that is obtain the dual of the function. Suppose our function is maximum of z is equal to 3x1 plus 5x2 subject to the constants 2x1 plus 6x2 less or equal to 50, 3x1 plus 2x2 less or equal to 35, and third is suppose 5x1 minus 3x2 less or equal to 10, and x2 less or equal to 20, and non-negativity condition x1 x2 greater than equal to 0. Okay, now here we have to obtain the dual of the LPP. Then what we do, first ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम से क्या कन्वर्ट करेंगे, मिनिमम. मिनिमम ऑफ z इक्वल टू, हाँ एक मिनट, इसके पहले हमें वेरिएबल लेने हैं, डिफाइन करना है. सेट ऑफ न्यू वेरिएबल, वी डिफाइन द वेरिएबल्स. देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 2 x1 x2 एंड नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर 1 2 3 4. तो अब हमें यहाँ पे कितने वेरिएबल डिफाइन करने हैं, नंबर ऑफ कांस्टेंट, जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट है उतने वेरिएबल डिफाइन करने, क्योंकि हम डुअल निकल रहे हैं. देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है, नंबर ऑफ कांस्टेंट 4 है, 1 2 3 4. सो वी हैव टू डिफाइन 4 वेरिएबल, y1 y2 y3 एंड y4. ओके, देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स से क्या हो जाएगा, मिनिमम. अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन वैल्यूज कहाँ पे जाएगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. मीन्स इट बिकम 50 y1 प्लस 35 y2 प्लस 10 y3 प्लस 20 y4. ओके, that is the objective function. Now subject to the constants, constants क्या हो जाएंगे वो आपके 2y1 प्लस 3y2 प्लस 5y3.
यहाँ पे तो y की x की टर्म नहीं है, x1 नहीं है, सो y4 क्या जाएगा आपका एब्सेंट, और ले साइन बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, और यहाँ पे क्या है 3, इट बिकम 3. That is the first constant. Now second constant is 6y1 plus 2y2 minus 3y3, और ये है प्लस 4 प्लस y4 greater than equal to, that is 5, and that is the dual of the primal problem. देखो, and non-negativity condition y1 y2 greater than equal to 0. Okay, देखो यहाँ that is the primal of given problem, and that is the dual of the given problem. Okay, we see another example. Then another problem is we have to obtain the dual of minimum of z equal to 3x1 plus 2x2 plus 4x3. Then constants are 3x1 plus 5x2 plus 4x3 greater than equal to 7. Then 6x1 plus x2 plus 3x3 greater than equal to 4, and 7x1 minus 2x2 minus x3 less or equal to 10, and non-negativity condition x1 x2 x3 greater than equal to 0. Now we have to obtain the dual of the problem. अब देखो dual निकालने से पहले, before that, see the objective function. Objective function is minimization type, so so equality sign of all the constant must be greater than equal to type. अगर यहाँ पे मिनिमम है तो सभी सभी कांस्टेंट में इक्वलिटी साइन ग्रेटर देन ही होनी चाहिए. अगर यहाँ पे मैक्स है तो लेसर इक्वल टू साइन ही होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे कैसे, 2 ग्रेटर है 1 लेस है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा. देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम है तो साइन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, बट थर्ड कांस्टेंट में इक्वलिटी साइन क्या है, लेस है, सो वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप. ये बात ऑलवेज ध्यान में रखना. ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमम रहता है तो साइन क्या चाहिए, लेस और इक्वल टू, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मिनिमम रहता है तो साइन क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज इट इज 3x1 plus 2x2 plus 4x3, constant 3x1 plus 5x2 plus 4x3 less or greater than equal to 7. Second constant 6x1 plus x2 plus 3x3 greater than equal to 4, and third constant become minus 7x1 plus 2x2 plus x3 less or equal to minus 10. Sorry, greater than equal to minus 10. Just we multiply minus to third constant. Then it become greater, and non-negativity condition x1, x2, x3 greater than equal to 0. And now we have to obtain the dual of the LPP. Now dual के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स 1 2 3, so we define 3 variable. So we define y1 y2 y3, new 3 variable. Then ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स से हो जाएगा मिनिमम ऑफ, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे मिनिमम ही दिया हुआ है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा मिनिमम से मैक्सिमम. देन
सॉल्यूशन वैल्यू जाएगी आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 7y1 प्लस 4y2 माइनस 10y3. ओके, देन आपके कंस्टेंट्स फर्स्ट कॉलम बिकम फर्स्ट रो मीन्स 3y1 प्लस 6y2 माइनस 7y3. ठीक है, साइन क्या हो जाएगी लेस, दैट इज 3. सॉल्यूशन वैल्यू जाएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आएगी सॉल्यूशन वैल्यू में. एंड सेकंड इज 5y1 प्लस y2 प्लस 2y3 लेस और इक्वल टू 2. देन 4y1 प्लस 3y2 प्लस y3 लेस और इक्वल टू क्या हो जाएगा 4. एंड दैट इज द dual of the given LPP. Okay, then we see another example. Then our next example is maximum of z equal to 3x1 plus 10x2 plus twice x3 subject to the constants 2x1 plus 3x2 plus twice x3 less or equal to 7 and 3x1 minus 2x2 plus 4x3 is equal to 3. Okay, now we have to obtain the dual of the given LPP. Now, so first what we have to do, so the objective function is maximization. तो हमारी इक्वलिटी साइन क्या होनी चाहिए, लेस और इक्वल टू. बट सेकंड कंस्टेंट क्या है, इज इक्वल टू टाइप है, तो हमें पहले सेकंड कंस्टेंट को लेस और इक्वल टू में कन्वर्ट करना है. अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप रहता तो हम डायरेक्टली इसको लेस और इक्वल टू में कन्वर्ट कर देते जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग दी -1. ओके, बट यहाँ पे साइन इज इक्वल टू है तो डायरेक्ट तो नहीं होगा. सो वी राइट फर्स्ट सेकंड कांस्टेंट एज 3x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3 लेस और इक्वल टू 3 and 3x1 minus 2x2 plus 4x3 greater than equal to 3. That is the most important point. देखो, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है तो साइन लेस रहनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम है तो साइन ग्रेटर देन इक्वल टू रहनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट की साइन इज इक्वल टू है तो हमें इसको कन्वर्ट करना है लेस और इक्वल टू टाइप में. ओके, सो इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज लेस इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. दोनों साइन है तो उसका मतलब क्या जगह इक्वल टू है. ओके, अगर लेस और ग्रेटर रहा, दोनों में से एक रहा तो हम -1 से मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट कर लेते. लेकिन अगर इक्वल टू टाइप है तो वी हैव टू राइट इट इन दिस फॉर्म. सो अब देखो हमारा LPP क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 10x2 प्लस ट्वाइस x3. एंड अब हमारे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे 2x1 प्लस 3x2 प्लस ट्वाइस x3 लेस और इक्वल टू 7. एंड सेकंड कांस्टेंट बिकम नाउ 3x1 minus 2x2 plus 4x3 less or equal to 3 and 3x1 minus 2x2 plus 4x3 greater than or equal to 3. ओके, देन उसके बाद क्या करना है, देखो मैक्सिमम है तो सभी लेस देन चाहिए, लेकिन थर्ड वाला अगेन ग्रेटर है तो इसको हमें क्या करना चाहिए, माइनस साइन से मल्टीप्लाई. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज इट इज 3x1 प्लस 10x2 प्लस ट्वाइस x3. एंड अब हमारे कांस्टेंट क्या आएंगे 2x1 प्लस 3x2 प्लस ट्वाइस x3 लेस और इक्वल टू 7. फर्स्ट वाला कांस्टेंट एज इट इज.
सेकंड वाला भी एज इट इज आएगा, 3x1 माइनस 2x2 प्लस 4x3 लेस और इक्वल टू 3, बट थर्ड नंबर का कंस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, -3x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3 लेस और इक्वल टू -3। थर्ड कंस्टेंट ये फॉर्म में क्यों गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर को लेस में कन्वर्ट किया, तो हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई। ओके, देखो एक बार यहाँ तक के वापस देख लो। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना है। मैक्स है तो साइन लेस चाहिए, मीन है तो साइन ग्रेटर चाहिए। ओके, बट यहाँ पे एक कंस्टेंट ऐसा है जिसकी साइन इक्वल टू है, तो हमें इक्वल टू को कन्वर्ट करना है लेस देन इक्वल टू में, तो डायरेक्ट तो नहीं होगी, तो हम लिख सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ए लेस और इक्वल टू बी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी कैन बी रिटर्न एज ए इक्वल टू बी। वी यूज दिस प्रॉपर्टी हियर, so we get 3x1 minus 2x2 plus 4x3 is equal to 3 become in this way. Okay, then this will replace second constant as, then objective function is max, so convert greater than equal to become less or equal to type, so we multiply negative sign on both side, we multiply here first second as it is here. Now that is our standard LPP, means given LPP become now standard LPP. Now we have to obtain the dual, and the condition is here x1 x2 x3 greater than equal to 0. Now we have to obtain the dual. अब हमें डुअल फाइंड करना है। अब तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं डुअल। नाउ फर्स्ट वी डिफाइन द वेरिएबल्स। अब देखो नंबर ऑफ कंस्टेंट 1 2 3, सो वी डिफाइन 3 वेरिएबल्स y1 y2। हाँ, अब थर्ड वाला वेरिएबल कौन सा लेंगे, देखो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड कंस्टेंट विद पार्ट ऑफ ओनली वन कंस्टेंट। सेकंड एंड थर्ड कंस्टेंट जो है वो एक ही कंस्टेंट के पार्ट है, सो हमारा वेरिएबल भी एक ही रहेगा, मीन्स y2 एंड y2 डैश, y2 एंड y2 डैश विद पार्ट ऑफ ओनली वन वेरिएबल। हमने यहाँ पे ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड वेरिएबल विद द पार्ट ऑफ सिंगल कंस्टेंट, सो वी कंसिडर द थर्ड कंस्टेंट एज y2 डैश। ओके, देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन डुअल में क्या हो जाएगा, मैक्स से मीन, मिनिमम ऑफ z इक्वल टू, देन 7 y1 प्लस 3 y2 माइनस 3 y2 डैश। हमने इसको एक ब्रैकेट में लिया कि दोनों कंस्टेंट एक ही कंस्टेंट का पार्ट है। देन सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स 2y1 प्लस 3y2 माइनस 3y2 डैश, और लेस और इक्वल टू बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, एंड हियर 3, solution value is 3. Then 3y1 minus plus minus 2y2 plus 2y2 डैश ए, -2 और ए +2 ब्रैकेट में लिए हमने दोनों, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, and third become 2y1 plus 4y2 minus 4y2 dash greater than equal to 2.
ओके ओके क्या किया हमने, जस्ट यहाँ पे ये दोनों इसको एक ब्रैकेट में लिया है. नाउ इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज, अब इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ our objective function is now minimum of our objective function is minimum of z is equal to 7y1 plus. Now we just write y2 minus y2 dash, or we substitute y2 minus y2 dash is suppose y2. देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कॉमन, y2 माइनस y2 डैश बिकम y2 मीन्स प्लस 3y2. दैट इज, ये हमने किसके लिए किया, फॉर आवर कन्वीनियंस. देन कंस्टेंट्स आर 2y1 प्लस 3y2 greater than equal to 3. देन नेक्स्ट इज 3y1. अब देखो y2 माइनस y2 डैश, सो वी टेक -2 कॉमन, -2y2 greater than equal to 10, and here 2y1 plus 4y2 greater than equal to 2, and that is the required dual of the given LPP. Okay, in this way we get the dual of the given LPP. And here again देखो यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी कंडीशन क्या है, y1 greater than equal to 0. बट ये जो y2 है, y2 को हमने, y2 कहाँ से मिल गया, हमें दो कंस्टेंट को मिला के, सॉरी एक कंस्टेंट को हमने स्प्लिट किया, वी गेट 2 कंस्टेंट, मीन्स इक्वल टू था इसलिए हमने इसको लेस एंड ग्रेटर इक्वल टू फॉर्म में कन्वर्ट किया. दो एक कंस्टेंट को स्प्लिट करके हमें y2 मिल गया. सो y2 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, y2 unrestricted in sign, and that is the non-negativity condition. In this way we get, or we obtain the dual of the given LPP, and given LPP is called as primal, and we get this dual by using this some important step. Okay, next इसमें हम थ्योरम लेंगे, and also we take this dual simplex method. Okay, thank you.